What are the role of nutrition in the third trimester for the in terms of baby and in terms of mother also? Well, third trimester, I think it's like your final semester of your graduation where, Yes. the theory is kind of done and we are ready to see the practical, what you're going to do. And that's like the thing. So it's really important for the nutrition. So it's the last time last trimester or the last months where you can feed the baby. So the developmental growth is the last minute that you can do. Immunity increases, the lung and the brain wiring, the development really increases. And so so the fat, iron, most of it gets stored, and so brain Yes. connections are built right now. So Yes. if your nutrition is not proper, then you're becoming like it's non-negotiable. Basically, you have to do it, because that's also where your delivery will also impact. How Yes. are you going to deliver, whether it's a C-section, whether it's a normal delivery. If not eaten well, your baby might be low birth weight baby. Then we have to think of the options like cesarean section or forceps delivery or vacuum delivery. So all of it is like the third trimester, because eventually the first trimester goes into your nausea, vomiting, your morning sickness. By second trimester, you gotta start settling down with your food, and Yes. third trimester is where you cannot negotiate with the food. So that's how important is the third trimester nutrition, basically. So coming to the protein rich, as my gynec said, okay, you have to take protein rich. Protein rich diet is non-negotiable in the third trimester. What is the reason behind it that you have to take protein rich diet in third trimester? So basically, what we hear in the reels also, everybody's on Instagram. So everybody is basic education सबके पास है, चाहे वो half ही है. So the three words: protein, iron, and healthy fats. That is the composition of your body, which ensures that you will do proper activity and living a healthy lifestyle. So that is what protein, iron, and healthy fat. So basically, which comes from lean mass and fat deposits that we all. Right, so protein helps in building the tissues. Iron ensures your oxygen blood supply, basically, and Yes, yes. fatty acids boost brain development. So that is what you said, like eggs. Eggs is a good form of all of this, like proteins and healthy fats. So we normally tell patients to have boiled eggs, especially during the third trimesters. Yes. If your protein is borderline or coming less, or baby weight is borderline, so it's you who have to decide. So if you have a religious barrier or something, then I think lentils, tofu does really well for you. Soya bean does really well for you. And for iron, what I tell my patients, take an iron cast kadhai or something, a vessel, and cook food in that. If you can't have iron and you can't have iron syrup or iron tablets, some people do not. So I just tell them to make protein-rich diet or a vegetable, add or maybe tofu or something, and make it in an iron cast vessel. So that, at least things get covered. Yes, So that yes. is how it is important, and that is a breakthrough. So please don't come to us and saying हमसे तो खाया नहीं जा रहा protein and I can't eat iron. You have to break that barrier and get to a solution, because not having will not impact us. It is going to impact your baby's development. So that is what I say, people, and that is how it is important to have all the three components in your diet. So थर्ड ट्राइमेस्टर में एक और कंसर्न होता है कि बच्चे के मतलब पानी कम हो गया, जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनास बोलते हैं, बट कॉमन लैंग्वेज में पानी कम हो गया. क्या रीजन होता है कि पानी कम हो जाता है? बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग इशू. बिकॉज अगर ओलिगोहाइड्रोमनास हो गया, पानी कम हो गया, तो आई थिंक यू नीड टू डिलीवर अर्ली बच्चे को, बिकॉज वो एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो गया तो बच्चा फ्लोट नहीं कर पाएगा और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन और फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं. सो उसका रीजन क्या है? लाइक हाउ कैन वी प्रिवेंट, और रीजन क्या है उसका? तो फर्स्टली ओलिगोहाइड्रोमनियस होता क्या है? एक लेमैन टर्म में इट्स अ रिड्यूस्ड एमनियोटिक फ्लूइड. वो पानी होता है जो प्रोटेक्टिव कुशन होता है बेबी के अराउंड. वहीं से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, वहीं से आपका you let out your urine and वहीं से खाना पीना आ रहा है, सब कुछ वहीं से हो रहा है. The programming of the baby is from the amniotic fluid. तो अगर amniotic fluid बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया तो पैनिक नहीं करना, act smartly. You have to go to, so obviously you go to the doctor and then they get your ultrasound done and आपको पता चलता है.
तो वाई इज एसेंशियल? बिकॉज बेबी की डेवलपमेंट, ग्रोथ वहां से होती है, लंग डेवलपमेंट वहां से होता है, मूवमेंट बेबी उसमें करता है. तो अगर इसका थोड़ा सा भी ड्रॉप हो जाएगा तो इट्स नथिंग मोर सीरियस बट नीड्स अ केयरफुल मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट. बेसिकली हम लोगों को क्राइटेरिया होता है 6 से अगर लेस हो गया है, फीटल मूवमेंट भी इफेक्ट हो रही है, बेबी की ग्रोथ भी ठीक हो गई है या बहुत कम ग्रोथ है, देन वी काइंड ऑफ गो टुवर्ड्स द डिलीवरी. नहीं Okay. तो पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं. आरजी प्रेग सैशेज बहुत लोगों ने सुना होगा. इट्स विटामिन सी सैशेज होते हैं which you take and then it will increase the fluid intake. Also you have to really take care कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लाइकर ही लीक हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा बट हाई लीक हो रहा है और you have a urine infection or something. So वो चीजें rule out करनी पड़ेंगी and that's the gynec's job to do it. You just have to tell the symptoms. Report ही नहीं करो तो gynac घर आके तो नहीं ढूंढ पाएगी. Yes, yes. So is there any role of diet and hydration to Yes. improve the amniotic fluid and to prevent इसको oligohydramnias को? बिल्कुल, हाइड्रेशन इज बिग टाइम. वो बहुत रोल करती है. इट्स द फर्स्ट लाइन एंड द मोस्ट नॉन इन्वेजिव स्ट्रैटेजी व्हिच वी कैन अप्लाई. यू हैव टू अंडरस्टैंड डिहाइड्रेशन या स्क्रॉचिंग 50-55 डिग्रीज की आजकल गर्मी है, तो हाइड्रेशन इज द की for you and baby also. So amniotic fluid is largely made up of fetal urine. सबसे ज्यादा so placental health is very important because वहीं से बेबी को हाइड्रेशन या न्यूट्रिशन जाता है. तो आप खाते हो प्लेसेंटा से कनेक्ट होके बेबी की तरफ जाता है. तो आपका ही खान पान या पानी पीना ठीक नहीं है तो वहां पे भी इफेक्ट होगा. Maternal hydration is very important because it has a direct link to the fetus. So that's the most first line treatment. So double up your hydration and add high water content foods. जैसे watermelon हो गया, melons हो गए जिसमें food में ही पानी. तो वो चीजें of course बिल्कुल हेल्प करती है because that's the first thing that you can do. Okay. And is there any food? Are there any food की जो हेल्प करेगी ओलिगोहाइड्रमनियास में, जो हमें प्रोएक्टिवली लेने चाहिए? फ्रूट्स आपने बताए, कोकोनट वाटर वेरी दिस. फ्रूट्स में ऑरेंजेस हो गए, ऑल काइंड ऑफ मेलन्स, कुकुम्बर्स हो गए, पीने में बहुत अच्छे से पानी होता है, रियली मेक अ गुड सैलेड एंड ऑल ऑफ दैट. देन बार्ले वाटर भी वी कैन यूज, बट बार्ले वाटर में होममेड होना चाहिए. ऐड अ लेमनेड and then maybe add a pinch of pink salt basically, which really helps. So 3 to 4 liters of water आपको पीना ही पीना है. And then iron rich foods also, जैसे beetroot has a lot of content of water. And because sometimes क्या होता है कि dehydration या amniotic fluid कम होता है because of iron deficiencies also. Okay. So placental functioning पे होता है. अगर प्लेसेंटा फंक्शन नहीं करेगा तो absorption doesn't happen. So iron food with vitamin C, बीटरूट हो गए, आपके डेट्स हो गए, पालक हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, pomegranate हो गए, so all of it also really combines. You really have to see.